Seems as if Pradeep is coming on to bowl now. Well, that is what happens, you know, whenever the Mumbai Heroes need for any motivation, all they have to do, Raman, is just glance towards their dugout and there's plenty of motivation right there. Motivation or distraction? Well, for the lack of a better word, which you came up with, I would call it motivation. And once again, showing maturity in his batting, going for those singles and trying not to hit those big shots where he can be caught. And it's a very, very pensive atmosphere in the Mumbai dugout. They're playing for pride. They have nothing to lose and nothing to salvage. They need a good partnership. Remember, partnerships is what's going to get you ahead in the shortest format of the game. He's a hard man to please. Pradeep. Oh, there's a cracker of a shot. It's through. It's going to be 4. Well timed and well played. Again, it's Shakib who's picked his spot. Karnataka Bulldozers fans still waving the flags of the team, showing their support, but this was a cracker of a shot from the Mumbai Heroes batsman Shakib. Absolutely. Keeping the wickets, keeping a good eye on the ball. The strength and power and good direction sends that ball towards the boundary line. And Karishma Tanna applauding the efforts of the wicket-keeper batsman. Now that should definitely boost up their confidence. They haven't lost a single wicket. The power plays are still on and they are maximizing it. They are capitalizing it and they're trying to get to that big intimidating total of 126 and he plucks it into the boundary line. It's another 4 for the Mumbai Heroes. Cracker of a shot this from Shakib. Yes, the cheer is returning to the Mumbai Heroes dugout, and the fans who are supporting the side. He's trying to create an angle here, Pradeep, bowling outside, wide outside off stump from the round the wicket angle. Shakib's picking his spot. Well, it's a 10-over game, so let us remind you that any bowler only gets to get 2 overs to bowl. And Sakib and Jay definitely contributing with the bat and trying to salvage the pride for their team. They didn't do too well yesterday. They know that they're playing for honor, they're playing for pride, and they're playing for the spirit of the game that they so love. 90 required of 45, which means the asking rate is exactly 12 per over. But the current run rate for the Mumbai Heroes is 14 and a half and thereabouts. So they're scoring at a brisk clip. Well, the Mumbai Heroes are not too potent with the bowling. पहली इनिंग्स में पावर प्लेस में उन्होंने ऑपोजिशन को काफी कंटेन करके रखा था रमन. पहले ओवर में 6 रन, दूसरे में 7, तीसरे में 13, चौथे में 12 और पांचवें में पैराशूट बंटा धार और बाउंड्री पार पार पार. पूरे 4 ओवर की बराबरी करा दी थी उस 30 रन के ओवर ने. ये लीजिए एक और बेहतरीन शॉट. 4 more. He's picked his spot. Varun Badola finally can smile. He injured himself, remember, while fielding, the captain for the Mumbai Heroes. मुंबई हीरोज की टीम दिग्गज खिलाड़ियों से और बहुत टैलेंटेड एक्टर्स से भरी हुई कलरफुल टीम है. बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करती है और बॉलीवुड का मुकाबला चल रहा है सैंडलवुड के खिलाफ. प्यार से जो मॉनिकर है बैंगलोर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसको सैंडलवुड कहा जाता है. वह उनकी विक्ट्री की महक तो यहां तक आ रही है. इतनी जल्दी नहीं, क्रिकेट है, बहुत चीजें बदलती हैं. इस ओवर के अंदर देखिए 14 रन आ चुके हैं. सिर्फ महक का ही जिक्र हुआ है रमन. अभी प्रोडक्ट जब आएगा तब हम पूरी बात मानेंगे. करेक्ट. 3 ओवर समाप्त फिलहाल. 23 रन ही जोड़ पाए थे वो शुरुआती 3 ओवर्स में. पर मुंबई हीरोज ने यहाँ पे गेम के साथ साथ अच्छा कैरेक्टर और संयम भी दिखाया है. और उनका डगआउट कभी पेंसिव तो कभी खुश. क्या यही होती है एक एक्टर की पहचान कि आपकी रेंज कितनी है. चलिए फिलहाल तो 2 मिनट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि महेश यानी मैगी गेंदबाजी करने आते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स की तरफ से. अब ये 2 मिनट सोल्यूशन मिलता है नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि शर्ट पे नजर रखेगा महेश की
पीछे देखिए क्या लिखा है इनके, अभी दिखाएंगे हमारे डायरेक्टर साहब। मैगी को कहीं बॉलीवुड का तड़का ना लग जाए रमन। देखिए फिलहाल तो ये सैंडलवुड की खुशबू है मैगी की। और बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। सुनील जोशी से मैं बात कर रहा था काफी देर पहले, मुझे कह रहे थे कि जब ये रॉक स्टार्स की जो टीम थी केपीएल के अंदर, जिसके साथ वो भी जुड़े हुए थे बतौर कोच और प्लेयर, उसमें मैगी एक बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। सुनील जोशी एक ऐसे उम्दा जज हैं टैलेंट की कि अगर वो किसी की तारीफ कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकती। पर मुझे पता भी नहीं था क्यों बोल रहे हो, थोड़ी देर पहले आप ही की बड़ाई कर रहे थे कुछ देर पहले कमेंट्री बॉक्स के बाहर। बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना रमन, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। देखते हैं कि ये 6 रन के ओवर के बाद क्या बचता है। और ये बहुत ही बड़ा शॉट, बड़ा है और कमाल का 6, बेहतरीन शॉट। क्या बात, 50 रन स्कोरबोर्ड पे मुंबई हीरोज के, और 30 6 लग चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और आज बौछार है सिक्सेस की। जी 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में मैगी के, और उनको भी मुझे लगता है कि अब 2 मिनट अपने कप्तान के साथ बिताने चाहिए और ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि अगर आप कहीं भी ब्लॉक होल के बाहर गेंद डालते हैं, और ये वाइड बॉल और रन्स मिलेंगे यहाँ पे, फील्डर गिविंग चेज and they'll get a couple of runs. Could have been easily avoided for the Karnataka Bulldozers. Remember, they have an upper hand. They've come up with a formidable score. And Sohail Khan. Finally, I've seen him smile today when we've cut the camera to him when he's been sitting in the dugout. He's been given something to cheer about with the way Jai Bhanushali is batting. And Shakib, of course, getting a move on as well. It's the second time I saw him smile, Raman, because when you called him a muscular gentleman, the grin on his face could not be wiped. Well, that was when he wasn't sitting in the dugout because he was standing, another bat in his hand. But look at that, another cracker. Jai Bhanushali, whatever he's had in the innings break, I think the entire Mumbai Heroes team needs to feast on that, because right now they're feasting on the bowling of the Karnataka Bulldozers. कमाल का शॉट, सिर्फ कोशिश यही थी कि बड़ा शॉट खेलेंगे। चौथा ओवर चल रहा है और in less than 4 overs they've already run the 59 mark. That is what is needed from the Mumbai Heroes. They were on a back foot. The kind of bowling effort that we saw from some of their bowlers was perhaps undone by these two gentlemen on the field. Now what they need to do is just consistently maintain this particular form and come up with more 6s and 4s. Current run rate 16.09. Kecha Shudip, well, he's a worried man now, the keeper and the captain of the side. Clever. Will get a single, but Jai Bhanushali is showing us the range. He's not hitting in the 180-degree range. He's got a 270, if not a 360-degree hitting range. And Shudip, that's why he's worried. It's always difficult for a bowler when the batsman's looking to play clever, play behind square as well. Well, Sudeep is a big thinker of the game, a brilliant actor, a very popular superstar in the Karnataka film industry. And the last ball of the 4th over, well, he tried to hit it big, but they will live with this. It's the end of 4 overs, and we have 60 runs on the board without loss.